Importance of primary and secondary sources. I am Muhammad Usman from Moonlight International Publication House, and thank you for joining me today here with a new interesting and very fascinating topic. The topic that I would explore in my today's lecture is the importance of primary and secondary sources in writing history, in understanding history, in you can say understanding the past. So आज का मेरा जो मौजू है वो इससे मुतालिक है कि तारीख़ लिखते हुए प्राइमरी माखज़ और सानवी माखज़ों की क्या अहमियत है. So first of all, I would talk about what are primary sources. Primary sources are sources which are contemporary to an event और टाइम. यानी अगर सिंपल अल्फाज में इसको बयान करूँ तो जो प्राइमरी सोर्स होता है वो किसी भी तारीख़ी जो डेवलपमेंट हुई है, कोई वाक़या रोनुमा हुआ है, उस वाक़े के मौके के ऊपर जो अकाउंट लिखा जाता है, कंटेम्प्रेरी से जो अकाउंट होता है, उसको जो है हम प्राइमरी सोर्स कहते हैं. दिस प्राइमरी सोर्स can be in multiple forms, like in written form, in visual forms, in oral forms. So in modern times, the oral form of the primary source, the visual form of the primary source has become very much important as compared to the written form of primary source. So if we talk about what kind of sources can be included in the primary sources, so we can say letters, personal wills, personal correspondences, personal conversations, autobiographies, memoirs, government records are considered as the primary sources. Now I will share my analysis on the importance of primary sources one by one in the form of bullets. Primary sources are considered as the most reliable and authentic sources. यानी तारीख के अंदर इनको reliable and authentic sources माना जाता है हिस्ट्री को लिखने के लिए. Primary sources bring novelty in the topic. यानी आप तारीख का कोई भी वाक़या लिखने जा रहे हैं तो वो उस वक्त तक नॉवल नहीं हो सकता, उसमें नयापन नहीं आ सकता, उसमें यूनिकनेस नहीं आ सकती जब तक आप उस टॉपिक को लिखने के लिए किसी प्राइमरी सोर्स को कंसल्ट नहीं करते. प्राइमरी सोर्सेज आर आल्सो सिग्निफिकेंट इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द रिसर्च गैप विच इज़ फिल्ड बाय द हिस्टोरियन. सो इन सिंपल टर्म्स वी कैन से जो प्राइमरी सोर्सेज होते हैं वो हमें रिसर्च गैप को ढूंढने में मदद देते हैं. यानी रिसर्च गैप वो गैप होता है जिस पे फिर हिस्टोरियन काम करता है. यानी गैप से मुराद तारीख में कोई रह गया ऐसा खिला जिस पे किसी ने काम ना किया हो तो उसको रिसर्च गैप कहते हैं. तो प्राइमरी सोर्सेज आर कंसिडर्ड एज द इसेंशियल सोर्स टू राइट हिस्ट्री, टू ब्रिंग नोवेलिटी इन द रिसर्च एंड टू आइडेंटिफाई द रिसर्च गैप. Now I will talk about what are the secondary sources. Dear student, secondary sources are the sources which have been written by the historians relying on the primary sources. यानी कि वो sources, वो माखिज़ जो primary sources की मदद से लिखे गए हों तो उनको हम secondary sources कहते हैं. They provide second-hand information, not first-hand information. If we talk about what kind of sources can be the part of secondary sources, we can include biographies, research journals, newspapers, books, articles, encyclopedias are considered as the vital part of the secondary sources. Now I will explore my analysis about the significance of secondary sources. Secondary sources are helpful to identify the research gap. Like the primary sources, secondary sources are helpful to provide a background knowledge of the topic. For example, हम किसी टॉपिक पे काम करना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि इस पे हमें पहले पता चले इस पे ऑलरेडी काम हुआ है कि नहीं हुआ. So in order to identify whether some historians have worked on this era or not, so in this regard, secondary sources are very much important. So with this, we can conclude by saying that primary sources are the sources which are contemporary to an event or a time period, while secondary sources are the sources which have been
produced by the historians by relying on primary sources. Thank you very much.